Evening, everybody. Okay, so once again, welcome evening, or welcome everybody for the evening of the concluding lecture for this ionic equilibrium. Since last few lecture, we were discussing ionic equilibrium, and today we'll be concluding this chapter theoretically. That is ionic equilibrium. So till that, what we have seen here in ionic equilibrium, we have seen ionic equilibrium. Equilibrium is the balance, is a kind of balance between undissociated molecules and dissociated molecules. Substances can be classified into two categories. There is electrolytes and non-electrolytes. You know it very well. And electrolytes are the substances which, when dissolved into the water, which when put into the water, they produces cations and anions. As well, they have some undissociated molecules. So undissociated molecule dissociate to produce cations and anions, and at the same time, cations and anions react to form undissociated molecules. And these substances are called as electrolytes. So naturally, these substances are classified in two categories: electrolytes and non-electrolytes. Electrolytes are the substances which, whenever put into the water, produces cations and anions, and that's why they can conduct the electricity. So electrolytes are again classified in two categories. That is, strong electrolytes and weak electrolytes. We have seen over here. So strong electrolyte dissociate completely, weak electrolyte dissociate partially. That is also what we have seen here in this chapter. Furthermore, in this chapter, being we are concerned with electrolytes, substances are nothing but the acid, base, and salt. This is a very important category. That is, acid, base, and salts are the substances which are called as electrolytes. So here we need to define what are the acids, because we know the examples of acid, we know the examples of base and salts, but need to define. So scientists try to define this, and we have three theories which try to define acid and base. सबसे पहला जो आता है, there is nothing but the Arrhenius theory. Next is nothing but the Lowry-Bronsted theory, and last is nothing but the Lewis theory, which define acid and base. Furthermore, we have seen dissociation constant of acid, that is Ka, dissociation constant of base, that is Kb, and Ostwald dilution law, which gives the relation between degree of dissociation of weak electrolyte and Ka or Kb, that is dissociation constant of acid or base. Furthermore, also we have seen that is auto-ionization of water. Water also dissociates to produce H plus and OH minus ions. And out of 1 mole of water, 1 into 10 raised to minus 7 mole dissociates. This has been experimentally proven. This figure is experimentally proven. That is also what we have seen, auto-ionization of water, and that's what we see in a KW. So जिस तरीके से हमने K देखा है, हमने K भी देखा है, हमने KW भी देखा है, and based on that, further we moved on towards the topic called, you can say, to decide the acidity or basicity of the solution. So naturally, whatever the solutions we have, we can classify them, that is acidic solution, basic solution, or you can say neutral solution. So we have seen how to measure this acidity or basicity or neutrality of the solution by using the pH. pH is the potential of hydrogen ions, and if we know the pH, we know the pH, because pH plus pH is equal to 14. That is the equation also what we have derived here in this equation. So simply pH is the measure of acidity, pH is the measure of basicity, or you can say pH is the measure of neutrality or neutral solution. In detail, we have seen that. Just I'm revising the headings what we have seen here in the chapter. Going further more ahead, we have seen that is, you can say, the pH scale, and the lastly, then afterwards we have discussed that is nothing but the hydrolysis of the salts. हम जानते there are the salts, and there are 4 kinds of salts: salts of strong acid and strong base, salt of strong acid and weak base, salt of weak acid and strong base, and salt of weak acid and weak base. These 4 kinds of salt, or 4 types of salts, whenever they dissolve into the water, they produces different types of solutions. Sometimes it may be neutral, it may be acidic, it may be basic, it may be slightly acidic, slightly basic, or neutral solution. That is what we have seen. We have seen the hydrolysis of these salts. When the salt, whenever put into the water, whatever the mechanism happens, that mechanism is called as a hydrolysis. So that is also what we have seen here in this chapter, that is hydrolysis of the salt. Also, we have seen what is buffer solution. बफर सॉल्यूशंस का डेफिनेशन देखा हमने, बफर सॉल्यूशंस के प्रॉपर्टीज देखे और बफर सॉल्यूशंस के एप्लीकेशंस भी देखे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म देखा, क्योंकि buffer solution is a solution which has a definite pH, and its pH do not changes even though a small quantity of strong acid or strong base is added. That is, you can say, buffer solution. So we have seen that. Okay. Then in last lecture we have discussed, that is, you can say, solubility, equilibria. So there is a category, one of the important category called sparingly soluble salt. These salts which dissociate in very small amount, and these are called sparingly soluble salt, as like AgCl, as well as VaSO4, then
aluminum hydroxides. These are the salts which dissociate in very, very small amount, and that's why they are called as sparingly soluble salt. And the equilibria related with this one is called as your solubility equilibria. And that's why we have derived a solubility product for this sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt also dissociate in water, but it's in small amount. They also produces cations and anions, but in very, very small amount. मतलब partial जो होता है उससे भी बहुत कम. देखिए पहले हमने देखा था complete dissociation, strong acid, strong base. Partial dissociation, weak acid and weak base. तो partial से भी कम, बहुत कम, and that is called as sparingly soluble salts. So we have seen this sparingly soluble salts and उसका solubility देखा हमने, that is KSP. देखा हमने KSP is equal to concentration of cations and concentration of anions. That is the ionic product we have seen. We also derived what is the solubility. We have defined solubility. We have seen the formula of solubility, and we also derived the relation between solubility and solubility product. So KSP is equal to x raised to x, y raised to y, and s raised to x plus y. This is the relation what we have seen in last lecture. Am I right? And उसी part के अंदर का last का कड़ी and the new topic and last topic, that is common ion effect. So let's move to the precipitation. Precipitation, what we have discussed. The conditions of precipitation. Conditions of precipitations. When solution precipitates or precipitation occurs, that is what we discussed. So conditions for precipitation. PPT मतलब precipitation. कई बार laboratory में experiment करते समय आपने देखा हुआ है कि when one solution is mixed with another solution, there happens a precipitation. Precipitate तैयार हो जाता है, which generally float on the surface of water. PPT, precipitate. So we have one of the important category of the experiments in 11th standard. You have seen. Well, luckily we are not able to perform these experiments in 12th standard because of lockdown. But वहाँ पे group detection नाम का एक experiment होता है, जहाँ पे हम लोग कई सारे precipitate देखते हैं, and we are not able to study that precipitate well. So that is the part. But there we have seen that precipitation occurs, and what are the reasons because of which this precipitation occurs. So we have to discuss here precipitation. So we have seen a solubility product, which is a very crucial or very important part for the salt. So as we have seen, suppose we have AgCl salt, which dissociate to produce Ag plus Cl minus. So applying law of association, we have seen KSP is equal to concentration of Ag plus or concentration of Cl minus. So this is nothing but the solubility product, and this is nothing but the ionic product. So इसी को हम लोग जब BA salt के साथ देखते हैं, so we can have BXAY salt. इसी के साथ देखते हैं, तो here क्या होता है, X moles of B plus or N plus and Y moles of A M minus. या फिर यहाँ पे M बोलो और यहाँ पे N बोलो आप लोग N minus whatever that. So this is the cations का जो charge है वो बता रहा है, anions का charge है, this is salt. तो BXAY salt यहाँ पे dissociate हो रहा है. So B is a cation, A is an anion, हम अच्छी तरह जानते हैं. X moles of B and Y moles of B are produced. और इसी का KSP देखते हैं, तो KSP is equal to concentration of B plus M into the concentration of A and minus. ऐसा देखते हैं. So this is called as solubility product. So this is nothing but solubility product. Solubility product. And this is nothing but the ionic product. Be clear here. So these are the ions B plus and A minus cations. ये particular example है. AgCl is a particular example, and this is a very generalized example. So आप समझ सकते हो, this is a very general term and this is a very specific term. So ये general term हमें याद रखना है. This is one of the examples. Just AgCl dissociated from Ag plus and Cl minus. Ag is a cation, Cl is a anion. उसी तरीके से अगर हम BA नाम का salt मानते हैं, तो BXAY salt है, dissociate होकर B plus M और Y A N minus ऐसा वो produce करता है. And that's why we can say KSP is equal to concentration of B Mn plus A N minus ऐसा हम लोग को मिल जाता है. तो ये जो KSP है, this is called as a solubility product of the sparingly soluble salt. And these are the ions of salt, and इनका जो product है यहाँ पे, that's called the ionic product. Now हम लोग कह सकते हैं here तीन conditions होते हैं. Number one, KSP is equal to IP, that is ionic product. ये जो IP है, this is nothing but the ionic product. So we can say ionic product. So जब KSP is equal to ionic product होता है, तो solution is saturated, you can say, or you can say equilibrium is there. Equilibrium is there. Here neither precipitations or nor you can say dissolution occurs, because
here solubility product is equal to ionic product. ये दोनों का value similar होता है. That's why it's neither dissociation nor association. So there is a solubility equilibria which is already existing as of now. Second condition होता है कि KSP is less than ionic product. Ionic product. मतलब ionic product is greater than KSP. Here a precipitation occurs. Here a precipitation occurs. Here ionic product is greater. Ionic product of ions is greater than, that's why the precipitation occurs because of the supersaturated solution. More ions are produced and that's why the ions comes together to form precipitation or PPT cancel. और तीसरा पार्ट यहाँ पे होता है where KSP is greater than ionic product. Ionic product. तो अभी इसके अंदर KSP ज्यादा है, ionic product ज्यादा है, तो here you can say solution is unsaturated. Solution is unsaturated. So हम जानते हैं there is a term called as saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. अब देखिए पहले मैं वो टर्म क्लियर करना चाहूंगा. What is saturated, what is unsaturated, what is supersaturated. मानो हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है और उस एक कप ऑफ वाटर के अंदर हम लोग शुगर ऐड करते जाते हैं, तो उस वन कप ऑफ वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, पर्टिकुलर अमाउंट. मानो एक कप ऑफ वाटर की कैपेसिटी 10 ग्राम शुगर का है, 10 ग्राम से ज्यादा शुगर वो डिसॉल्व कर ही नहीं पाएगा, उसकी कैपेसिटी है. सो 1 cup of water has the capacity to dissolve 10 gram of sugar. So अगर हमने 10 से कम डाला, 9 ग्राम शुगर डाला हुआ है, तो अभी भी 1 ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है. 1 gram more quantity can be dissolved because it has the capacity of 10 and we have dissolved just 9 gram. That means this is called as an unsaturated solution. The solution in which till more quantity can be dissolved, is called as, you can say, unsaturated solution. Or if cup of water has the capacity of 10 and we have put complete 10, that is called as saturated. No more single particle can be dissolved. No more single particle can be dissolved. That is called as saturated solution. Or suppose that 1 cup of water is heated. So हम अच्छी तरह जानते हैं कि cold water dissolves less and hot water dissolves more. So 1 cup of water जिसका capacity 10 gram है sugar dissolve करने का, वो cold condition में, normal condition में. अगर उसी cup of water को हम heat करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है कि 11 या 12 ग्राम क्वांटिटी डिसॉल्व हो जाए शुगर का, बिकॉज हॉट वाटर में डिसोल्यूशन ज्यादा होता है. सो दैट मींस और वही वाटर को अगर कूल करते हैं तो वो जो ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व होता है वो प्रेसिपिटेट होकर निकल आ जाती है, क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाती है. एंड दैट सॉल्यूशन जिसको हॉट कंडीशन में मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व कर चुके हैं, हॉट कंडीशन में मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व कर सकते हैं, उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उससे ज्यादा क्वांटिटी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. And that is called a supersaturated solution. So ये है saturated, unsaturated, supersaturated terms. So these are related with this solubility product and ionic product. So when we are talking about the KSP and ionic product, किसी भी solution में if KSP is equal to ionic product, then there is an equilibrium between the ions and undissociated molecules exist here in sparingly soluble salt. Or wherever KSP is less than ionic product, मतलब ionic product is greater, मतलब cations and anions बहुत ज़्यादा है. That means it is a supersaturated solution. And being it is a super saturated solution, precipitation may occur. Precipitation हो जाता है, हो सकता है. And third, when we talk about the KSP is greater than ionic product, this is greater than ionic product. This means the solution is unsaturated, so more quantity can be dissolved. More quantity can be dissolved. That is what you can say unsaturated solution. So that is what we can say here. Conditions for precipitations. तो अगर precipitate करना है हम लोग, तो ionic product should be greater than KSP. उसके एक में तो उसका एग्जांपल तो कई बार आ ही जाएगा, मतलब दूसरे कॉमन आयन नाम का एक इफेक्ट है, उसके अंदर इसका एग्जांपल आ ही जाएगा. तो दोनों के लिए एक ही एग्जांपल देता हूं मैं, वो उसमें आएगा. आपको बस ये जरूरी कंडीशन याद रखिएगा. Hope so everyone got it. So keep it in mind. It is given in book 2 again in the same way almost. Again, so we are turning towards a concluding part, or last part of the chapter. That is nothing but the common ion effect. So common ion effect. So what is this common ion effect? That is what we're discussing here. So let's move to common ion effect. अब देखिएगा common ion effect क्या है, उसका मैं एग्जांपल दूंगा और एट द एंड ऑफ एग्जांपल में आपको उसका डेफिनेशन समझाऊंगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन भी है और एग्जांपल भी है, एक्सप्लोर भी करना है, इलस्ट्रेट भी करना है. Suppose we have acetic acid
CH3COOH. This acetic acid being a weak electrolyte, double-headed arrow. This acetic acid dissociates to produce CH3COO minus plus H plus. So this is the dissociation of acetic acid. Everyone got it? Acetic acid dissociate to produce acetic ions and H plus ions. Acetic acid already weak electrolyte और इस weak electrolyte को यहाँ पे dissociation हो रहा है. We got this cations and anions and ये. तो हमें उस solutions के अंदर ये भी मिलेंगे जो undissociated format में ये anions भी मिलेंगे और cations भी मिलेंगे. That is you can say उसका degree of dissociation जो भी है alpha वो उसका alpha रहेगा. तो कुछ तो alpha है उसका मतलब 0.1 0.2 उसका alpha रहेगा. Alpha is a degree of dissociation हम अच्छी तरह जानते हैं. How much number of moles we have taken and how much number of moles dissociated, that is that relation is given by alpha, that is degree of dissociation. Now मानो ये जो है वो इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पे वाटर है और इस वाटर के अंदर हमने ये पुट कर दिया. अभी इसी सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पुट करते हैं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट आता है CH3COONA. ओके, अभी ये सॉल्ट है or salt is considered to be a strong electrolyte as compared with the weak acid and weak base. So this is the strong electrolyte which dissociates to produce CH3COO minus plus Na plus. So this is minus, sorry. So that's why this is plus. So this अभी यार मैंने ऑलरेडी बताया था कि डबल हेडेड एरो आएगा तो इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और सिंगल हेडेड एरो आएगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये सॉल्ट है तो सॉल्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. So this salt dissociates to produce this one, and this is the equilibrium what we get here. मतलब salt almost 100% dissociated, 100% ionized, और dissociate completely. This is a weak electrolyte जिसका कुछ तो dissociation था, कुछ तो उसका अल्फा था, ये होता है. अभी होता क्या है? इस कंटेनर के अंदर पहले सिर्फ एसिटिक एसिड था. अभी हमने ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया. अभी इस वाटर की अपनी कैपेसिटी होता है, इस वाटर की अपनी कैपेसिटी से कितने आयंस को वो उसके अंदर अकोमोडेट करेगा. और दोनों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जब डिसोशिएट होता है तो ये आयंस पैदा करता है और ये जब डिसोशिएट होता है तो ये आयंस पैदा करता है ये. तो ये जो आयंस दिखते हैं ये वाले दोनों आयंस ये कॉमन है, ये आयंस कॉमन है. मतलब these are called acetate ions. तो ये acetate ions are also present in acetic acid and this acetate ions are also present in the sodium acetate. तो ये आयंस सॉल्ट में भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है. सो ये उसकी इंपॉर्टेंट खासियत है कि ये आयंस कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी. ये आयंस को इसके अंदर अकोमोडेट करने की कैपेसिटी होती है, पहली बात है. और दूसरी बात है कि कॉमन आयंस होने के कारण किसी ना किसी आयंस को तो वापस जाना पड़ेगा. तो ये जो सब्सटेंस है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो इसका जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, मतलब वो डिसोसिएट हुआ था, वो डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ दिस वन. तो एक आगे रिएक्शन होता है फिर उसके बाद ये पुट करने के बाद ये जो एसिटेट आयंस है CH3CO माइनस प्लस ये H प्लस रिएक्ट होके यहाँ पे मिलता है CH3COOH. ये मिल जाता है, ये मिल जाता है. सो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा एक थियोरेटिकल लैंग्वेज में. अगर हमने इसके मानो 100 मोल्स लिए थे, देखिए हमने इसके 100 मोल्स लिए थे एसिटिक एसिड के, 100 मोल्स ये ऑलरेडी वीक है तो 100 में से 4 ही मोल डिसोसिएट हुए, 100 में से 4 ही मोल डिसोसिएट हुए. तो इसके 4 मोल्स मिलेंगे, इसके भी 4 मोल्स मिलेंगे, नो डाउट एट ऑल. अभी इसके अंदर इसके भी हमने चलो 50 मोल डाल दिए, जो भी है 50 मोल डाल दिए, पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा. इसके 50 मिल जाएंगे, इसके 50 मिल जाएंगे. अभी होता क्या है, ये आयंस कॉमन है और ये आयंस कॉमन होने के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होता है, डिक्रीज होता है. तो इसके जो 4 मोल डिसोसिएट होते हैं उसमें से एटलीस्ट 1 या 2 मोल वापस इस तरफ चले जाएंगे अनडिसोसिएटेड फॉर्मेट में. तो इसके कुछ मोल्स या फिर इसके कुछ मोल H प्लस साथ रिएक्ट होके ये तैयार करेंगे. तो स्टार्टिंग में अगर हमने माना कि 100 आउट ऑफ 4 मोल डिसोसिएट हुए थे तो ये डालने के बाद ये 4 में से वापस 2 वापस चले जाएंगे और 2 ही इस तरफ रहेंगे. तो स्टार्टिंग में इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 4 मोल्स था, लेकिन ये पुट करने के बाद वो 2 मोल्स रहा है. मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा हम जानते हैं, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज number of moles dissociated upon total number of moles taken. Upon total number of moles taken. So ये होता है. So in this way we can state that number of mole dissociated इसके अंदर कितने थे, 4. total number of moles कितने थे, 100. तो पहला जो था हमारा, पहला क्या था, 4/100, ये हमारा इक्वेशन मिला था, ये मिला था. अभी दूसरा इक्वेशन क्या मिलता है,
इसके 2 मोल वापस आएंगे तो हमें मिलेगा कितना 2/100 मिलेगा अल्फा। तो ये सेकेंड अल्फा है और ये वाला पहला अल्फा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो पहला अल्फा कितना था 4/10, मतलब इसका 4/10 इतना डिसोसिएशन हुआ, इसके कारण इसका डिक्रीज हुआ, वो कितना बना 2/10। तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। सो इन दैट सेंस वी कैन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी डिसोसिएट हुआ था, हो रहा था, होता है, दिस इज सप्रेस्ड और डिक्रीज्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयंस, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है, इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। दिस इज व्हाट वी कैन से कॉमन आयन इफेक्ट। तो जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग उसे मारता है, एंड व्हाट वी गेट हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका डिक्रीज होता है। सो वी कैन से degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed, degree of dissociation of weak electrolyte is decreased due to addition of strong electrolyte containing common ion। अगर दूसरा कोई strong electrolyte हम लोग पुट करते हैं, से HCl पुट करते हैं और या फिर NaCl पुट करते हैं, जो इसमें कोई भी आयन कॉमन नहीं, तो that doesn't affect the degree of dissociation। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तभी अफेक्ट होगा जब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो स्ट्रांग भी हो और कुछ ना कुछ आयंस कॉमन, कुछ ना कुछ आयंस कॉमन। हाँ, अगर हम लोग HCl पुट करते हैं वर्क कर सकता है, क्योंकि HCl के अंदर भी H+ है, इसके अंदर भी H+ है। सो कुछ ना कुछ और कोई ना कोई आयन तो कॉमन होना ही जरूरी है। दैट इज व्हाट वी कैन से, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा इसी के अंदर, जो मैंने पहले इसके अंदर आपको बोला था, जो आप लैबोरेटरी में भी करते हो। लैबोरेटरी में करते हैं कि AgCl which sparingly soluble salt dissociate to produce Ag+ plus Cl minus, and this is you can say double-headed arrow. The reason behind it is weak electrolyte, sparingly soluble salt। ओके, तो AgCl dissociate to produce Ag+ and Cl minus। इसके अंदर अगर हम ऐसा करते हैं कि AgNO3 पुट करते हैं, AgNO3 dissociate to produce Ag+ plus NO3 minus। अभी AgCl is a sparingly soluble salt, AgCl is a sparingly soluble salt, and so AgCl is a sparingly soluble salt and whose degree of dissociation is already weak or small, and this is a salt whose degree of dissociation is comparatively higher than this, matlab it's a strong electrolyte, it dissociates completely। So both have the common ion Ag+, Ag+। So because of this strong electrolyte containing common ion Ag+, degree of dissociation of weak AgCl is suppressed, weak AgCl is suppressed, and that's why the precipitation of AgCl occurs। So reaction क्या होता है इसी, Ag+ Cl minus produces AgCl, and this is precipitation। precipitation ऐसे दिखाया जाता है, और कैसे दिखाया जाता है, precipitation दिखाया जाता है arrow downwards, arrow upwards मतलब gaseous format में जाता है, downwards मतलब precipitation होता है। So here precipitation। तो AgCl के सॉल्यूशन में अगर AgNO3 पुट किया जाए तो Ag+ और Cl minus रिएक्ट होकर AgCl का precipitate तैयार होता है। This is the precipitation। तो इसका मतलब है AgCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसके कारण सप्रेस हुआ, या फिर ये जब आयंस पुट किया हमने तो ये जो आयनिक प्रोडक्ट है AgCl का वो बढ़ गया, तो आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीजेस and that's why precipitation occurs। So this example can be given for both things, that is you can say common ion effect के लिए भी दिया जा सकता है और you can say precipitation कब होता है उसके लिए भी दिया जा सकता है, and this is the best example for we can say common ion effect। समझ में आ रहा है? So what is common ion effect? तो common ion effect is effect in which degree of dissociation of weak electrolyte is suppressed, is decreased due to addition of strong electrolyte containing common ions, and this phenomenon is called as a degree of dissociation। Clear with this? So hope so everyone got this, and इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए, तो बने रहेगा और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लर्न भी कीजिएगा व्हाट द फॉर्मूलाज ऑफ वी आर सीइंग हियर इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इजी। अगर कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग बातें करेंगे सर दिस इज द टॉपिक व्हाट वी नीड इट अगेन, या उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा जरूरी है, सो वी कैन हैव टॉक्स लाइक दिस वन और उस तरीके से। Let's we have some of the formulas what we have seen here in this chapter, general representation and formulas। सबसे पहला जो देखा हमने that is acid dissociate। Okay, so we have seen dissociation of acid। Okay, तो HA dissociate to produce H+ plus A minus, और इसके लिए देखा हमने that is Ka is equal to concentration of H+ into concentration of A minus upon concentration of Ha। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखा हमने बेस का VOH dissociate to produce B+ plus OH minus। इसके लिए देखा हमने Kb is equal to concentration of B+ into concentration of OH minus upon concentration of BOH।
उसके बाद देखा हमने वाटर का H2O dissociate to produce H plus plus OH minus. उसके लिए देखा Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 40. इसी के अंदर हम देखा out of 1 mole of water, out of 1 mole of water, concentration of H plus into is equal to concentration of OH minus is equal to 1 into 10 raised to minus 7 moles. ये याद रखिएगा, it's very important. फिर इसके बाद हमें तीसरा फोर्थ फार्मूला इसके अंदर देखा हमने, that is salt के बारे में. तो salt का dissociation होता है BA होता है. So salt BA dissociate to produce B plus plus A minus. और salt का हाइड्रोलिसिस देखा हमने, salt का ये नहीं देखा हमने. Equations, बहुत सारे equations है salt के अंदर, but these are out of the scope of our book. So we are just in the hydrolysis of the salt. Salt का हाइड्रोलिसिस हमने उसके अंदर डिस्कस कर लिया है. Clear with this? So उसी के अंदर हमने उसके बाद pH देखा. तो pH क्या देखा हमने? pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration. फिर इससे देखा हमने pOH. pOH is equal to negative logarithm to the base 10 of OH minus ion concentration. और 7 देखा हमने pH plus pOH is equal to 14. This equation is also what we are seeing here in this one. इसके अंदर हमने डिस्कस कर दिया. ठीक है. फिर उसके बाद देखा हमने KSP देखा हमने. So KSP is equal to concentration of B plus into concentration of A minus E देखा हमने. उसी के अंदर देखा KSP is equal to x raised to x dot y raised to y dot s raised to x plus y. This is also very important equation what we are seeing. ये इसके अंदर हमने डिस्कस कर दिया. Okay. Then सॉल्व के लिए देखा था हमने, that is you can say relation between pKa और pKb, ये भी हमने डिस्कस किया था. So these are the different equations what we have discussed here in this chapter called Ionic Equilibrium. So I will suggest you that this is a very easy chapter. Don't put this chapter to the options and all. Each and every topic has to be prepared very well. It will give out of marks because it's very easy. There are some of the numericals we'll discuss in next lecture. So have the screenshot of all the formulas, please, and then we'll take bye-bye for today, and tomorrow we'll come up with some numericals. So please have a screenshot of this formulas.